ओके, चलो जी। वेट कर लेते हैं, बाकी आ जाए। हाँ जी खदीजा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको टाइम टेबल भेजा है सर वासिफ ने? दोबारा उन्होंने मुझे कहा था कि रिवाइज टाइम टेबल भेजो, तो क्या सर मैंने उनको पहले बताया नहीं था, अपडेट की नहीं थी, तो शी वाज लाइक व्हाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर? एनी हाउ, इंशाल्लाह हमारा इवनिंग वाला टाइम टेबल विल ओनली बी फॉर मे बी 1 or 2 more weeks। इंशाल्लाह जनवरी जो विंटर हॉलीडेज हैं उनके बाद let they will let you know. Also, Khadija, मुझे ये बताएं कि have you been given any official notice about your December exams? मिस सईदा ने कहा था छुट्टियों के बाद लेंगी, उनसे फोन पे बात हुई थी। अच्छा 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 अच्छा, वो घर बुलाने वाला सिलसिला नहीं कर रही। चले, ओके, चले, we'll talk about this later. All right, chale ji. So now the next thing that we are looking at is basically the second method. Random sampling ka second method hai, which is known as the mark, release, and recapture. Mark, release, and recapture. ठीक है. If you look at the word, it will basically explain you. पहले कुछ organisms को mark करते हैं, फिर इनको release करते हैं, फिर उनको recapture करते हैं. So look at this diagram. Inshallah, this should make sense. So for example, if we have a population of wood lice, okay, what we're doing is we are actually collecting a sample randomly. Look at this green thing. That's basically what they've chosen randomly, okay, और फिर उनको mark किया है. Now we can mark them in many different ways, but we have to ensure कि आपके mark करने से it is not harmful to them. You have to ensure कि अगर आप mark कर रहे हैं तो इस तरह mark करें कि they are not evident to the predators more, for example. यानी कि it should not make any difference with your marking, except for the fact कि आपने यानी कि कुछ ऐसी, यानी कि अगर कोई bird है तो उसके पर के नीचे कोई चीज लगा दी, I mean something to this effect, okay. And we will see to that inshallah. इसको करके मैं आपको इसका question भी दिखाता हूँ. फिर आपने mark किया और आपने इसको population में sample में जो है वो release कर दिया, ठीक है. So now you within the population you have a sample mixed with population. So that the gray ones are the ones that were not picked and marked, and the red ones have now mixed themselves with the population since you released them back into the population, and now you have a mixture of some of them that are marked and some of them that are of course not marked. Then you recapture again a sample at random from the population जिसमें आपने marked को initially release किया हुआ था. Okay, so now when you recapture, so I mean if you like, that's the M, the mark, that's the R, release R1 कह लें इसको, और फिर ये recapture है, that's the R2. And now you have the second recapture. You can clearly see that of the sample that you've collected, you also have some marked. Okay. अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गई. तो फिर इसका हम क्या करें? How is this? Why are we even using this? Well, we are using this to get an estimate of the population size. ठीक है, वैसे हम individually count नहीं कर सकते, तो हम उसको इस तरह कर रहे हैं. इसका formula क्या है? देखें, we are using capital N to represent the population being estimated. That is what we are trying to calculate. It is difficult for us to count all of them one by one. So what we, and again, this is an estimate. ये जो formula है ये कोई 100% accurate नहीं है. It's just a formula that has been used. Okay, N1 is representing the number captured, marked and released. तो ये जो red वाले हैं ये are representing N1. ठीक है. So in our case, for example, this is 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, let's say that's 5. Okay. N2 is the total number captured on the second equation. Okay. Second occasion, sorry. यहाँ पे देखिए हमने अच्छा एक second, total number captured on second occasion. ठीक है. And then N3 is number of marked. Okay.
N2 हमारे इस एग्जाम्पल में से क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8. So the ones that we recaptured, that was the total number, so that's N2. ठीक है, that's equals to 8. And N3 is the number of marked individuals recaptured. अब आप देखें जो हमने रिकैप्चर किया उसमें टोटल 8 है और उसमें जो मार्क्ड हैं वो कितने हैं? बताएं मुझे कितने हैं, कितने नजर आ रहे हैं? रेड वाला कितना नजर आ रहा है? एक नजर आ रहा है. So that's 1. So the formula is capital N equals to N1 multiplied by N2 divided by N3. ठीक है, ये इस फॉर्मूला को इस तरह याद रखना can get difficult, so what I would advise is कि आप इस formula, and yes, you need to remember this formula. So let me write down this formula for you in words so that you can remember it in words also. So the formula will be something like this. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. N equals to, and N you know is representative of the total population. The total population. Okay. So what we do is number of captured and marked and released, comma marked or released होना चाहिए था. चले, please pardon my bad English. Multiplied by total number captured in total number recaptured. ठीक है, divided by number of marked individuals recaptured. Marked individuals recaptured. ठीक है. So this is how we will use the formula, and this is what is another way of random sampling. ठीक है. अच्छा, ये जो ग्राफ लेफ्ट साइड पे इसको आप फिलहाल जरा इग्नोर करें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या है. नाउ अगेन इसका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा? वेल, लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चन. ओके, ये देखें जी, ये है जी मई जून 2019 का क्वेश्चन नंबर 7, अगेन फ्रॉम वन ऑफ द वेरी रीसेंट पेपर्स. It says the passage below outlines one method used by a student to estimate the population size of an animal species. Complete the passage by using the most appropriate scientific term or terms. So let's see if we can do this. There are 6 of them. So let's try. Acha ji, a student estimated the population size of an animal. Okay, population size आपको पता है हमारे उस फॉर्मूला में n है. ठीक है, हमें इस क्वेश्चन से पढ़ के तो अभी पता नहीं लग रहा कि दिस इज मार्क कैप्चर एंड रिलीज, बट ही इज टेलिंग इट. He is telling in the statement, a student estimated the population size of an animal using mark release dash technique. हाँ जी, क्या है mark release? What's the third name? Recapture. ठीक है. अच्छा जी, this can only be used for dash animals such as mice. Small. माइस कुछ छोटा तो नहीं होता वैसे, आपस की बात है. काफी आपने लाहौरी चूहे देखे नहीं फिर. देखिए, कैन आई डू दिस मेथड फॉर बर्ड्स? क्या ख्याल? No. कैन आई डू दिस फॉर मच्छर एंड मक्खीज? So it's either, as you rightly said, it's either small or mobile. आप खुद देखें, मैं प्लांट्स को मार्क, रिलीज और रिकैप्चर कर सकता हूं, क्या ख्याल है? Do plants move? No, they don't move. Okay, so the condition is this can be used only for small mobile animals such as mice. The student caught a sample of mice using humane traps. The student then marked the mice in a way that did not dash them. हाँ जी, क्या होना चाहिए? सोचें. Harm them. Harmful नहीं होना चाहिए ना.
effect in a harmful way basically. ठीक है? For example, the mark did not make them more visible to potential predators. Predators, shabash. The student, I'm sorry. The student released the marked mice and left enough time for them to randomly dash with the population. Mix with the population. Disperse, integrate. ठीक है? वरना अगर छोड़ते साथ ही दोबारा कैप्चर कर लिया तो बेचारे इधर उधर जा ही नहीं सके होंगे और आप पहले ही कैप्चर कर लेंगे उनको. So we need to give them some time. The student then caught a second sample of mice and noted the numbers of marked and unmarked mice. The student estimated the population size by multiplying the number of mice in the first sample by the number in the second sample, then dividing the number of dash mice in the second sample. Anji, कौन से mice in the second sample? Come on, tell me what's marked mice. Shabash. क्या हो जाता है मेरे वन नोट? Marked. ठीक है जी, मुश्किल है कि इजी है? सच सच बताएं. कोई बहुत लंबी चौड़ी बायो नहीं मैं पढ़ा रहा आज के टॉपिक में आपको. I mean, honestly, these are simple ideas. Okay, so again, this is what we use as sampling. As part of random sampling. So we've seen two random sampling techniques today. Let me quickly go back. So the first one, sampling का मैंने आपको general idea बताया. And then I said we have random and we have systematic sampling. Random में you've seen quadrant and you've seen mark, release and recapture. Systematic में बच्चों हम देखेंगे further two types. Excuse me. The first one is line transect. And the second is belt transect. Again, very simple ideas. Let me explain what that is. Dekhiye, you know, okay, wait. ये आप ही की टेक्स्ट बुक की डायग्राम है बच्चों. ये देखें जरा. जो ऊपर वाली डायग्राम है, that is telling us about a line transect. Okay. Let me first read it out what this is and then let's see if you can tell me that why are we, I mean, हमने क्या किया, एक साइड पे एक दो चीजें लगाई हैं और उसके साथ एक धागा सा या रस्सी सी लगा दी है. That is our line basically. Okay. So it says line transect, a line across one or more habitats. The organisms found at regular points along a line are noted. Transects are used to detect changes in community composition along the line across one or more habitats. Dekhiye, why aren't we using quadrants now? You know, we use systematic sampling in areas which are not uniform. What do I mean by areas that are not uniform? I want you to look at this diagram. Look at these two investigators. They are using a habitat which is more or less very uniform. Uniform को क्या मतलब है? Simple grassy है. कोई आपको muddy या कीचड़ नहीं नजर आ रहा. You can't see any pond or any lake. You can't see any mountain hilly area. It's more or less it's static. So random sampling के लिए अगर static सा आपका habitat हो तो उसमें random sampling works wonders. That's the best thing you can use. But if you have an area which, for example, has a grassy portion और फिर उसमें कुछ मट्टी और कीचड़ भी है, फिर उसमें कुछ पानी, I mean, there is this lake element, there is this rocky element, then you can't use quadrats, okay? You have to use what is known as the line transect, okay? यानी कि फॉर एग्जांपल एक साइड पे आपने लैंड में एक लाइन लगाई है, दूसरी में कोई डंडा इंसर्ट किया है पानी में फॉर एग्जांपल, और फिर उनके बीच में आपने लाइन लगा दी, okay? And then what you're using is that's basically, and then you're basically literally counting all of the plants or all of the organisms that either touch or are around the vicinity of that particular line, okay? इसीलिए इसको हम कह रहे हैं, this is known as the line transect, okay? The belt transect is actually a very similar idea. It's just that it is the same thing as the line transect, लेकिन उसमें आप at equally spaced intervals
quadrates को रख रहे हैं. You're placing the quadrates at equally spaced intervals, okay? And then you are measuring either the frequency or the percentage cover, all of what we talked about previously. ठीक है? इसको कहते हैं interrupted belt transit. यानी कि you're not, what does interrupted mean? You're not considering the entire length of line. You are just considering the quadrates that are placed at equal distances just beneath the line or on the line. ठीक है? Okay, question. इस पे exam questions किस तरह आते हैं? Well, let's go and see how the questions are. Okay, so let me see. Yep, there you go. Again, May, June 2020 के एक और variant पे, question number 8. It says sampling can be used to find the distribution and abundance of species in an area. Okay, so distribution and abundance. Students sampled a rocky shore. Okay, rocky shore का क्या मतलब है कि from a high tide area to a low tide area. इसका मतलब ये है कि ये grassy area था, फिर ये पानी वाला area आ गया, और फिर ये यहाँ पे कोई mountain type चीज भी थी, rocky चीज भी थी. I mean something to this effect. So that's maybe the lake. Okay, that's maybe the ground. So that's basically what it means. It has high tide area to low tide area. They decided to use belt transect. Describe how would you carry out belt transect to assess the distribution and abundance of organisms. Belt transect के notes आपने कहाँ से लेने हैं? वो आपने इस marking scheme से लेने हैं. Okay, so let's look at that. Again, very simple idea. Lay out a line / tape. Line runs from low tide to high tide area. यानी कि for example, आपने क्या करना है? आपने एक डंडा इधर लगाया, एक इधर लगाया, इधर लाइन लगाई, या फिर आपने इधर लगाया और इधर लाइन लगा दी. Something to this effect. मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम इस तरह की बनाई है कि it looks quite strange कि माउंटेन के ऊपर लगा होगा और यहाँ पे इतना लंबा होगा. But the point is that the line only does not have to be on the ground area. या फिर not only on the lake area, या फिर not only on the rocky area. It has to cover all of these areas. Okay, so line tape runs from low tide area to high tide area. Then since this is interrupted belt transect, इसलिए आप coordinates use करेंगे. देखें question में उसने कहा है, he has said that describe how do you carry out belt transect. Okay, interrupted belt भी कह देते हैं, खाली belt भी कह देते हैं. Reference to use of quadrates, reference to interrupted belt transect. Okay, उसने यहाँ पे एक separate marking point दिया हुआ है इस चीज का. You have to qualify this by explaining what this means, which means as it has said in point number 5, place quadrate at regular intervals या equally spaced. Then measure the species frequency. Frequency आपको पता is the occurrence, the number of times. Again, the same cockroach example. For example, you have 3 quadrates. ठीक है, तो आपने 3 quadrates place किए. आपके पहले quadrate में 3 दफा cockroach आए, फिर 4 times and then maybe 8 times. So that's the frequency if you like. Or if you are assessing a plant species, for example, जिसके लिए आपको you can't do the frequency, you have to do the percentage cover, then you use the Braun Blanquette square. So you just are referring to that, okay? And then of course you repeat the sample. ठीक है, तो ये है जी आपका systematic sampling technique, okay? And then इसके साथ वो kite diagrams और वो सारी डिटेल है, आपको इस चीज में जाने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, हाँ जी. Are we good so far? जी बच्चों, I need a good yes. Are we good so far? Anything that is ambiguous and that is confusing? Okay, I'm assuming that's not the case. चलें जी. अब to move on, now there's a slight statistical flavor that I will give, और इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे. जो बाकी आपका टॉपिक है ना, इंशाल्लाह वो it's all theoretical. So आप फिक्र नहीं करें. I know we still have, you're thinking we still have half of the topic that's left. What we are left with is something very basic, so don't worry, inshallah. Okay, now these are 3 graphs that you can see. I'll come back to this particular diagram. Now, for example, इस quadrant में आपके cockroach की example ही ले लेते हैं. I apologize, I don't know why cockroach is coming to my mind, but that's how it is.
यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 5 आ रहे हैं, यहाँ पे 8 आ रहे हैं. That's the frequency. Now I want you to, for the sake of argument, मैं कहता हूँ ये this is quadrant A, this is quadrant B, and this is quadrant C. As you are transition, ये इन तीनों को देखें, मुझे बताएं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा ग्रासी कौन सा है? A है, B है कि C है? B. ओके, तो क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि जिसमें ज्यादा ग्रास होगी उसमें ज्यादा कॉकरोच होंगे? I mean, can I assume this? I mean, can I ask as a question? So can I say, is there a relation? So what I'm trying to say is, maybe the increase in one factor is is not a cause. Actually, I don't want to use the word cause. Increase in one factor shows increase in other factor. इसका ये मतलब नहीं है कि उस फैक्टर की वजह से दूसरा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है. देयर कैन बी अदर फैक्टर्स आल्सो दैट आर इंक्रीजिंग. सो द पॉइंट इज देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स. ओके, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन को क्या मतलब है? एक वेरिएबल, हमारी एग्जांपल में कॉकरोच और ग्रास, फॉर एग्जांपल कॉकरोच and grass. So in our example, if I can say positive correlation क्या मतलब है? अगर ग्रास ज्यादा है तो कॉकरोच भी ज्यादा है, ग्रास ज्यादा है तो कॉकरोच भी ज्यादा. और ये सारे पॉइंट्स में नोट करो और आप देखें, इट्स टिपिकल दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द लाइन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. अगर प्लॉट आपके प्लॉटिंग की इस तरह की शेप हो तो उसको हम कहते हैं इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन. It's just a correlation in which you're just telling more number of cockroaches will mean more number of grass. It does not mean causal relationship. क्या मतलब? ये आइडिया समझने में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. It simply means the increase of grass is not causing the increase of cockroach. It's just that if you have more grass, you have more cockroach. Maybe there are other reasons why this is happening. That is why we say that correlation is just telling us कि अगर एक ज्यादा है तो दूसरा भी ज्यादा. Just describing the relationship. It is not telling you that this is the cause. So please understand. ये मैंने जो word आपको लिख के दिया है, इसको आप highlight कर लें अपने पास. It does not show causal relationship. This is negative correlation, which means if अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रास ज्यादा हो रही है, जहां पे ज्यादा ग्रास है वहां पे आपको कॉकरोच कम मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल. अगेन, this is not causal. This is just what is being seen and what is being plotted. Okay, we can't say that because of more number of grass, that is the reason why you have less number of cockroaches. No, it's not a causal relationship. Okay, there may be other factors that are causing this. That's why we're saying it's not that it's the grass that is causing this. There can be other factors. So therefore, it's not a causal relationship. और ये जो बीच वाला है, this is no correlation. ठीक है, this is no correlation. इसके बारे में हम डिटेल में इंशाल्लाह अब कल बात करेंगे. ये 2 स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, वो बात करके फिर इंशाल्लाह हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे. So to summarize, we've talked about sampling today in detail, and it's 2 categories: random sampling, which includes quadrats and mark release recapture, and then you have systematic, if you like, which is the line transect and the belt transect. Ji bachcho, any questions we have for today? No questions? बता तो दें. No questions? Rabia, is everything clear? चलें जी. अच्छा, मैंने आज सुबह बैठ के जो है ना वो पिछले टॉपिक के मैंने आपको जो नोट्स नहीं भेजे हुए थे वो सारे किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं. तो वो इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इकट्ठे ही भेज दूंगा सारे, ताकि आपके पास भी एज अ रिकॉर्ड यू कीप ट्रैक ऑफ देम. आई डिड सेंड सम ऑफ देम हियर एंड देयर, बट आई वांट टू इंश्योर कि आई डू दिस. और ये आज जो हमने क्लास नोट्स किए हैं ये हैं बायोडाइवर्सिटी के. टुडे वी डिड रैंडम, एक्चुअली जस्ट सैम्पलिंग उसकी डिटेल ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है. आज क्या डेट होगी बच्चों? व्हाट्स द डेट टुडे? 7th December 2020, और आज डे है जी मंडे.
2027 लिख दिया, सॉरी 2020 है, ठीक है। ये this thing and then I will also send you पेपर्स को हम दोबारा भी करेंगे इंशाल्लाह बाकी सारे, लेकिन जितने मैंने आज किए हैं वो भी मैं आपको भेज देता हूँ ताकि यू कैन टेक नोट्स ऑफ ऑल ऑफ व्हाट वी हैव डन फॉर टुडे इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें जी इंशाल्लाह। आई एम एंडिंग हियर टुडे, इफ यू हैव नो क्वेश्चंस। कल इस आइडिया को हम आगे बढ़ाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा ज़रा कि आप टेक्स्ट बुक की अगर रीडिंग कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। You will get an idea because टेक्स्ट बुक में चीज़ें काफ़ी scattered हैं। मैंने to the point जितना आपको चाहिए था वो आपको बता भी दिया और आपको उसको पास पेपर्स में दिखा भी दिया। So you don't have that headache कि where do I take all of that stuff from? All right, thank you class। अपना बहुत ख्याल रखें। See you tomorrow same time। अस्सलाम वालेकुम।